A matrix A is set to be diagonalizable if M inverse A M is equal to D. Okay. Now what is A? A is the original matrix, given matrix. Yeah. Okay. M is the model matrix, or sometimes this is called transform matrix. ये क्या होता है? दिस इज जो भी हम वेक्टर फाइंड करते हैं उसको इस फॉर्म में लिखते हैं. सपोज वी हैव 3 वेक्टर. ओके, सो दिस इज M. लेट सपोज वेक्टर है 1 0 0 0 1 2 1 1 1. So this is V1, this is V2, and this is V3. Okay, these vectors are basically eigenvectors. Okay, whose eigenvectors? Eigenvector of A. Okay. Okay, now what is M inverse? M inverse is inverse matrix of matrix M, right? Okay, if AM of lambda, lambda means eigenvalue, is equal to GM of lambda, then matrix A is diagonalizable. This is condition for diagonalization. You know what is AM and GM? Yeah, yes. And if this is for when eigenvalues are repeated, okay? When eigenvalue repeated, okay? When eigenvalues are distinct, then it is always diagonalizable. Suppose eigenvalues are different, then A is always diagonalizable. Okay. Okay, see, अगर एक मैट्रिक्स A है, इसका आइगन वैल्यू लेट सपोज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है, तो तीनों आइगन वैल्यू क्या है? डिफरेंट है एंड रियल नंबर है, देन दिस इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल. ओके. ओके, अगर इसका आइगन वैल्यू लेट सपोज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 2 ये रिपीट कर रहा है, तो हम चेक करेंगे क्या? am ऑफ lambda 2 must be equal to gm of lambda 2, right? अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है देन यू कैन से ए इज डायगोनलाइजेबल. अंडरस्टूड? अगर डायगोनलाइजेबल है तो ये हमेशा वेरीफाइड रहेगा. एंड व्हाट इज डी? डी इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? ऑल आइगन वैल्यूज आर केप्ट इन डायगोनल फॉर्म. ओके, तो हम डायगोनल में रखेंगे तो इसी को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. अंडरस्टूड? ओके, अब हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं. Zero, so you subtract lambda on the diagonal and find the determinant such that it equals 0. Okay. And all the lambda values that fit that like characteristic relationship are eigenvalues. Right. And then for that eigenvalue, you find the null space and those are the eigenvalues. Right. So I am revising so that you can see. A minus lambda I determinant must be equal to 0, right? Okay. So you can add 8 minus lambda minus 3 minus lambda 1 minus lambda is equal to 0, right? Okay. You know the formula, shortcut formula for finding eigenvalue? Is it where you
Uh, no, no. I show you one formula. Let's suppose for finding eigenvalue. Okay. For order 2, see, when you solve this, you will get a polynomial, Mhm. and that polynomial is cubic polynomial, right? Okay. So when a matrix of order 2, the polynomial will be quadratic. Mhm. So you can see there is direct formula for finding polynomial of order 2. Sum of diagonals plus determinant of n. Okay. See, this is shortcut for finding eigenvalue, or you can say for finding characteristics polynomial for order 2. Sum of both diagonals or just the main diagonal? Principal diagonal, this diagonal. Whenever I say diagonal, always consider principal diagonal. Okay. For order 3, lambda cube, lambda square, sum of diagonal plus lambda sum of minor minus determinant of a. Okay. So there is alternate sign in each equation. Okay, what is minor? I tell you. See, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल और एट लास्ट तुम्हें यही फॉर्मेट में कुछ तो मिलेगा. ओके. So first of all, I tell you how to find sum of diagonal. What is sum of diagonal? So I'm the plus minus. No, no. See this part, original matrix. Oh, original 8 minus. So 6. Okay. Sum of minor. See, see sum of minor. Okay. Multiply. You can see there are 3 elements in diagonal. So multiply each element by making pair. First 8 into minus 3 becomes minus 3 into 1, then 8 into 1, right? Okay. अब क्या करेंगे? देयर इज माइनस साइन बिटवीन दीज टू ब्रैकेट. अब हम अपोजिट साइन लेंगे, या यू कैन से जो रिमेनिंग टर्म है 8 इंटू -4, 3 इंटू -2 and -4 into -2. Okay, this is called sum of minor. So -24 -3 -8 plus 8 cancel और 8 minus 11. plus 2. 11. तो क्या करेंगे, जो डायगोनल में एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे बाय मेकिंग पेयर. ओके. अब ये डायगोनल हट गया. अब जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. एंड यू नो हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट. Yeah. ओके. यू नो शॉर्टकट हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट. Uh, I don't know whether I know the shortcut. ओके. सी, जैसा मैट्रिक्स लिखा है वैसे ही लिख लो 2 टाइम्स. Oh, yeah, that's shortcut. सी, दिस इज a matrix, original matrix. So see how to find determinant. Very easy. No need to use calculator. You are allowed to use calculator in college. Oh, no, I'm at Okay. Because for this chapter, some teacher allowed calculator. Okay, don't page worry. 19. We don't.
Okay, no worry. Still I tell you how to find determinant by shortcut. क्या करो, ये मैट्रिक्स जैसा है वैसे नीचे लिख लो बैक टू बैक. मल्टीप्लाई दीज थ्री एलिमेंट. तो क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई अगेन दीज थ्री टर्म्स. अगेन मल्टीप्लाई दीज थ्री टर्म्स. राइट, प्लस 40. अब तीन वैल्यू इधर से लो और तीन वैल्यू अपोजिट साइड से लो. ओके, तो अपोजिट साइड से जब लेंगे तो व्हाट वी गेट? 18 विथ नेगेटिव साइन ना. पॉजिटिव साइन. minus यस. it from okay. whenever you start from opposite side always put minus. एंड इसका क्या हो जाएगा? 64 एंड देन माइनस minus 30. 32. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर. तो तीन देखो क्या करो, तीन इधर से मल्टीप्लाई करो एंड तीन इधर से. बट वेन एवर यू स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड पुट माइनस. ओके, so what will you get? 8, 56 minus 50 32, to 6. 50. 6 is the answer. So cubic equation you are getting. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा by using determinant, at last we will get same thing. Okay, ये तुम्हारे लिए नया था because you know this, right? Yeah. Okay, अब देखो, ये you have what? Cubic polynomial. So with the help of cubic polynomial find the eigenvalues. Okay, you can see when you put 1 you will get 0, right? It means इसका एक रूट क्या होगा? 1 होगा. Okay, and you know how to find root using synthetic method. Yeah, the long the synthetic division. Yeah. So 1 is taken as it is, so multiply 1, so whatever you get here put here, Minus, then again multiply minus 6, again multiply. So you can write lambda minus 1 into, lambda squared minus 5 lambda. okay, and you know how to factor this. The minus 2 तो अब यहाँ से मुझे देखो 1 2 3 रूट मिल गया. तो सपोज यू गॉट योर आइगन वैल्यू, बट कॉन्फिडेंटली तुम बोल सकते हो क्या दैट माई आइगन वैल्यूज आर करेक्ट? हाउ कैन यू चेक? equal and put them in the original characteristic equation and check whether they equal 0. नो नो नो, हमने तो जीरो से ही फाइंड किया ना, तो जब उसमें हम पुट करेंगे वी विल गेट जीरो, नो डाउट. एनी अदर मेथड? सपोज Find the eigenvalue. no, eigen vector is different. Eigen vector is eigen space. I am asking that how can you say that my eigen values are correct? Okay, I tell you because this is important. Sometimes student write eigen value and
कभी कभी क्या होता है कि हम गलत लिख देते हैं। तो यू कैन चेक एंड इट्स वेरी इजी, इट इज 2 सेकंड स्टेप। क्या करो, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है? Eigenvalue. सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। If you add all the diagonal element, you will get what? Sum of eigenvalue. Check. Sum of eigenvalue is 6 and sum of diagonal element is 6. right. Okay. A product of one more way. Product Wait, of yes. is it just an observed property that the trace is equal to the sum of eigenvalues? Yeah. Trace of the matrix is called sum of diagonal element. Okay. And product of eigenvalue क्या होता है? Determinant of A. You know, when you multiply all eigenvalue, you will get 6. And here determinant is also 6, right? So in this way you can say that my eigenvalues are correct. And when you do diagonalization, the things on the diagonal are the eigenvalues, the diagonalized matrix. See, after finding eigenvalue, eigenvector, we can verify that matrix is diagonalizable or not. Here all eigenvalues are what? Distinct? Yes. Then you can say confidently that yes, A is diagonalizable. अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। अभी तो मुझे ये पता चल गया कि दिस इज डायगोनलाइजेबल, अब प्रूफ करते हैं। ठीक है। So before proving, we have to find eigenvector for each eigenvalue. Okay. So can you tell me the eigenvalue, eigenvector for one? Yes. So you do what? A minus lambda I x is equal to 0. तो डायगोनल में 1 माइनस करते हैं, राइट? तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच डायगोनल एलिमेंट। Just to ओके। multiply the first one by 3 and the last one by -7. ओके, so you can do one thing, what? You can write r1 minus 2 r3, right? R1 minus 2 R2, yeah. 7 minus 6 is 1. So always try to make it 1. Minus 8, 0. yes. Minus 2, and this is same. Okay. Now with the help of this one, make it 0. 2, 3 R. It has to be 3 R2 minus 4. Or, yeah. Right now, R2 is changing with 4 times of R1, right? Yeah. So you will get So, 0.
नॉट 6, क्या 6? Wait, not 0. 6. R3, 0, negative 4, 6. yeah, 6. Okay. Now this row will be 0, right? R3 minus R2. Okay, you can say X3 is equal to 3. yes. Let x3 x1 plus 0 x2 minus 2 x3 is equal to 0, right? Okay. Okay. Let एक वेरिएबल को तो t मानना पड़ेगा. सपोज x3 is equal to t, so x1 becomes 2t and x2 becomes 3 by 2t. 3 over 2t. So vector you are getting x1, x2 and x3. Multiply 2 in each term, you will get what? 4, 3, 2. This is eigenvector for lambda is equal to 1, right? So I am writing here. Now we will find for eigenvalue 2. Okay. So here I am writing for 2. तो डायगोनल में क्या माइनस करेंगे? 2. तो जब यस, तो जब हम डायगोनल में 2 माइनस करेंगे, आई थिंक ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है 0 0, बट वो प्रोसीजर होता है. समटाइम टीचर अवॉइड दिस बिकॉज दैट इज यूजलेस. तो 6 minus 8 minus 2, right? Okay. First of all, make it anyhow 1. कोई भी एक एलिमेंट को 1 बनाओ. एक बार 1 बन गया तो काम हो गया, right? And you can see this is double of 2 minus 4, 3. yes. I think no need to make 1. Write directly. R1 becomes R1 minus 2 times of R3, right? Okay. 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 Then let's do R2 minus R3. R2 minus 1, negative 1. The first one is supposed to be 1. first element of row 2. Yeah, 1. Sorry. Okay, now it is correct. Now R3 becomes R2, right? तो ये 0 हो गया. ये क्या हो जाएगा? -4 plus 3 -1 -1 plus 3 2. So x1 minus x2 minus x3 is equal to 0. Equals t. किससे बस? Or negative x2 equals negative 2t. Yes.
So let's suppose x2 is equal to t. Yeah, let's suppose x3 is equal to t. Then x2 becomes 2t. 2t. Yeah. x1 becomes minus 2t minus t. 3t. The x1 equals, yeah. So vector will be 3t, 3, 3, 2, 1. So this is eigenvector for 2. Okay. Now we will find for 3. Okay. Does this mean the eigenvector always represents वो always होता है just like line की तरह because कोई भी multiple of b? Yeah, because वो तो वेक्टर है ना, वट एवर यू मल्टीप्लाई दैट इज स्केलर वैल्यू. तो वेन एवर यू मल्टीप्लाई एनी स्केलर वैल्यू, फॉर्मेट वही रहेगा, दैट इज कॉल्ड बेस. हमने पढ़ा होगा व्हाट इज बेसिस ऑफ मैट्रिक्स. तो बेस इज ऑलवेज सेम. Oh, and the eigenvector वो base होता है. यस. तो दिस इज बेस एक्चुअली. सो व्हाट एवर यू मल्टीप्लाई इसी के मल्टीपल में रहेगा. -3 -3 -6 -2. So first I make it 1. Minus 2. Oh, sorry. I read it. 5 minus 4 1 minus 8 plus 6 minus 2. This is 0. 0. Two minus 4 0. Or No, no. Once you are changing R1 with the help of R2, you cannot change R2 simultaneously. In next step, change R2. Okay? क्योंकि R2 का हेल्प ले रहा हो ना, तो you cannot change R2. Okay? yeah. You can't change R2 with the help of R3. No, no, no. In this step, you cannot change R2 with the help of R3. Why? No, no. Because their notation Yes, will be yeah, confusing. yes, yes. Right? Yeah, because you don't want the notation to be confusing. Yeah. Oh, okay. Always try to make it 1. एक बार 1 बन गया तो 1 के हेल्प से we can, हमको क्या करना है, डायगोनल को छोड़कर इन सबको 0 बनाना है. So once it becomes 0, we can stop there. But would this have been a valid step doing row 2 minus row 3? Row 2 minus row 3. In which step here? Yes, you No, can do. next. In No. next step? In this step? Yeah. नहीं, once you are changing R1 with the help of R2, you cannot change R2. Oh, Right ना? जब ये चेंज हो जाएगा तो R1 डिस्टर्ब हो जाएगा. So R1 is not same that time. R2 is not. Yes. But you can change here R3 because R3 का हेल्प नहीं मैं ले रहा हूँ. R3 is independent. So -6 plus 8. 3 minus 3 0. -4 plus 6. Right. Wait, you just did row 3 minus row 2. I thought you couldn't do that because that would change. Oh, because row 2 was independent. Yeah. Okay. Let's suppose x3 is equal to t.
So x2 becomes t, x1 becomes 2t, right? Vector will be 2t, tt. Okay, understood? Okay. Now you can see, can I delete this? Yeah. Okay. The value of m is what? First eigenvector, 4, 3, 2. Second eigenvector, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Okay. This is called what? Transforming matrix or model matrix. Now, can you tell me the inverse of m? Um, do you do that form where and then you write zero the identity matrix right You next know how to find? Because, yeah. okay, When you divide the yes. So ये आ गया m inverse. And you know m inverse m inverse is what? Minus 1, 1, 1, 1, 0, minus 2, 1, minus 2, 1. And a मतलब original matrix. read. And then m. What is m? Okay. अभी मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा. Okay. Yeah. So you know how to multiply? Okay. Negative 1. Hmm. It's negative 8 plus 4 plus 3. Minus 1, 1. One. Negative 1, 1, 1. Yeah, I'm multiplying. Oh, Okay, so after multiplication, when we multiply these two matrices, I am getting, if you do matrix operations on calculators, what calculator do you use? actually I am doing with calculator. Yeah, which calculator model? If you want to purchase, always purchase Casio 999 FX or 991 scientific Because calculator. I took, I don't know, do you know the AP calculus exam? Yeah, AP calculus. Yeah, I know. The teacher made us get DI inspired. Okay, okay. Yeah, I think it uses a kaise. That's the same thing as kaise. But in engineering, this will take time. It is not about mental ability, it is about time. Because if you spend a half hour in this question, then how will you calculate other question? But still if you are doing manually, it is also good. अब देखो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई दिस टू टर्म, आई गेट दिस. नाउ अब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या मिल रहा है. 1 मिनट, आई एम मल्टीप्लाइंग.
ओके, तो मुझे ये मिल रहा है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, डी, क्योंकि ये क्या है, आइगन वैल्यूज है ना, Yeah. और लास्ट में यही मिलने चाहिए आइगन वैल्यूज इन डायगोनल। तो यू कैन से एम इनवर्स ए एम इज इक्वल टू डी, That's वेरीफाइड। diagonalized. या, अंडरस्टूड। So always find eigenvalue, eigenvector, and use this formula for verification. And it is always equal to D if all eigenvalues are different, distinct. Okay.